So, so here is the topics that will you see in the direct test of Sakhar University. First of all, reading comprehension. You may see reading comprehension in your direct test. One minute. Reading comprehension. लिखिए चुनौती. In the direct test of Sakhar University, you will see the reading comprehension. In uh, in reading comprehension, sorry for the writing. So I am not used to the pad. That's why I feel difficulty in writing. So the test, you will see the portion of reading comprehension. Almost 8 to 10 MCQs will be from reading comprehension portion. And the second portion that will you see in your test is from vocabulary that contains synonyms, antonyms. And the third topic that will you see in your test, that is use of correct prepositions. And the fourth topic that will you see in your direct test is error detection. And the fifth topic you also see in your test is use of correct verbs. And the last and but not least, the topic you will see in your direct test is identify tenses. You will be given the sentences and they maybe ask you that identify sentence. This sentence belongs to which sentence? So today we will see all topics just thoroughly, how reading comprehension will come in your test and how will you crack your reading comprehension. So let's move to the reading comprehension that already Sir Said has shared with you. So we are moving to that reading comprehension and we will understand how to attempt the reading comprehension. So here is the reading comprehension. So first of all, we are reading thoroughly this comprehension. So in start, consequently, they struggle with academics, friendships, and later in their professional lives as well as family lives. With the rapidly changing social dynamics coupled with unlimited access to information and technology, today's children are in more precarious position. Children suffering from psychological conditions are more likely to fall prey to online groomers and traffickers and can take drastic measures. Suicide, suicides. Besides monitoring children's online presence, parents and caretakers should look for signs of psychological issues. So this was the reading comprehension we have read thoroughly. So what questions they may ask from you from this reading comprehension? They might be interested to ask about main idea, what is the main idea of this reading comprehension. They might be interested to ask from you what's the contextual meaning of words given in the reading comprehension. They might be asked from you what this word actually means. They ask from you maybe synonyms and antonyms from this reading comprehension. So moving to the upward, starting and understanding, cracking this reading comprehension. Here the in start word is consequently. So anyone knows the meaning of word consequently, please let me know.
Anyone knows Nothing. the meaning of word consequently? Please open your mics and answer. नतीजा. जी, yeah, consequently means as a result. Memon is right. Consequently means as a result. So the synonyms of consequently are therefore, as a result, in a result. But what will be your answer if I ask what is the consequently with reference to parts of speech? We have added part of speech. If I ask what is the consequently with reference to, with respect to parts of speech? Anyone? Adjective. No, consequently is not adjective with Adverb. reference to. Yeah, consequently is actually adverb with reference to the parts of speech. But I am asking what's consequently. Acha, actually, if you are not understanding lecture in English, I will start teaching in Urdu. No worries. So consequently अगर हम देखें तो मैं बोलूं कि ये consequently parts of speech में क्या होगा, तो आपका एक आंसर आया एडवर्ब. ओके, आई एग्री, एडवर्ब है. लेकिन मैं पूछ रहा हूँ इस पैसेज में उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हैसियत है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज. नॉट जनरली कंसिक्वेंटली इज अ एडवर्ब, बट अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज. एनीवन? Adjective. नहीं, एडजेक्टिव नहीं होगा यहाँ. कॉन्सिक्वेंटली कनेक्टर एज अ कनेक्टर यूज हो रहा है. आप जब भी आएंगे आप पढ़ेंगे कि कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट यहाँ कनेक्टर के तौर पे यूज हो रहा है इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में. कनेक्टर क्या होते हैं हमारे पास? कनेक्टर को पहचानने की एक जो आपके पास साइन होती है कि उसके बाद कामा लगा होता है. आप देख रहे होंगे कि कॉन्सिक्वेंटली के बाद बिल्कुल कामा लगाया गया है. कॉन्सिक्वेंटली वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, लेकिन विद रेफरेंस टू दिस पैसेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉन्सिक्वेंटली आपके पास जो है कनेक्टर है. कनेक्टर कंजक्शन आप इसको बोल सकते हैं. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, according to this reading comprehension, the word used consequently, what is with respect to the parts of speech? So the correct answer for this question is connector conjunction. So here is the one answer I have got from Nargis Fatma, conjunction. Okay, let's move forward. They struggle with academics. This sentence, इसमें यह सेंटेंस आगे भी है लेकिन यहाँ मैं रुकता हूँ. दे स्ट्रगल विद सर मेरा एक एकेडमिक्स. क्वेश्चन है. जी 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 जी. सर अगर यहाँ पे कामा ना होता तो हमारा ये एडवर्ब हो जाता ना. क्या हो जाता? एडवर्ब सर. देखें, जहां तक इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जर्नली जो कॉन्सिक्वेंटली है ना वो एडवर्ब है, लेकिन यहाँ इस पैसेज में इसकी हैसियत एज अ कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. तो पर कामा सर तो ऑप्शंस में दोनों दिए हुए हो. ऑप्शंस में. जी यही जी, दिया हो ऑप्शंस. कि दोनों ही ऑप्शंस में दिए तो हुए आप ऑप्शंस में तो आपको दोनों ही दिए जाएंगे, एडवर्ब और कंजक्शन. लेकिन इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है स्पेसिफिकली, उसमें कॉन्सिक्वेंटली क्या है जर्नली नहीं पूछ रहा आपको. इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हवाला दिया जा रहा है कि इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कॉन्सिक्वेंटली क्या है. ओके आई सर. होप योर पॉइंट इज क्लियर. नाउ मूविंग टू द फॉरवर्ड. यहाँ दे स्ट्रगल विद एकेडमिक्स, ये किस
टेंस का जो है सेंटेंस है, एनीवन कैन आंसर. Present simple. Yes, this present sentence simple is, yeah. All are good correct answers. They struggle with academics, बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है. लेकिन अब जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा था, व्हाट एक्चुअली कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इज. वर्ड की एक ओरिजिनल डिक्शनरी में एक मीनिंग डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दी गई है उसमें विद रिस्पेक्ट टू दैट स्ट्रगल विद की मीनिंग कोई अलग होगी. एनीवन कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ स्ट्रगल विद, contextual meaning, not the meaning that is present in dictionaries. Struggle with, what is the contextual meaning of struggle with? Please, anyone can tell. कनेक्टर सर. जी, इसको हम प्रेपोजिशन या कनेक्टर भी कह सकते हैं. एक आंसर आया है हमारे पास, स्ट्रगल विथ इज टू पुट एफर्ट फॉर नथिंग. ये तो इसकी जो मीनिंग है वो डिक्शनरीज में जो एक्चुअल मीनिंग मौजूद है. मैं पूछ रहा हूँ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग. अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग पेन कॉम्प्रिहेंशन, इसकी स्ट्रगल विथ जिस सेंस में यूज हुआ है उसकी वजह से इसकी माना क्या बनेगी? स्ट्रगल विथ समथिंग, नो, डू ब्रेक इट डाउन, नो. तो अगर हम कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखें तो वो मीनिंग होती है जो अकॉर्डिंग टू पैसेज हो, ना कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी. तो स्ट्रगल विद एकेडमिक्स की जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, दैट इज चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज दैट स्टूडेंट्स फेस इन देयर एकेडमिक्स. सो स्ट्रगल विद एक्चुअली फ्रेजल वर्ब है. अगर फ्रेजल वर्ब किसी को पता हो तो वो डिफाइन कर सकता है. एनीवन कैन डिफाइन व्हाट इज द फ्रेजल वर्ब? Sumit Kumar says struggle with is working along. No, dear, it doesn't mean working along, but its contextual meaning is challenges and difficulties that a student face in their studies, according to this passage. जी, फ्रेजल वर्ब्स की आप जो मीनिंग बता रहे हैं वो काफी हद तक ठीक है, लेकिन इसको ठीक कर दें कि फ्रेजल वर्ब is a verb is when main verb is followed by preposition or adverb, then main verb converted towards phrasal verb, or it's called phrasal verb. Struggle is a main verb and it is followed by with. So this actually word is phrasal verb. Whole word struggle with is a phrasal verb. So it means challenges and difficulties student faces in their studies. अगर मैं पूछूं they struggle in academics, is it right sentence? They struggle in academics, is it right sentence? Mehak Memon says this, yes, this is right sentence. Anyone else? Yes sir, right. Faiza Bhutto says no. Tahir says prepositional error. So Mr. Tahir and Faiza Bhutto is obviously correct answers. They struggle in academics is a wrong sentence because struggle never takes preposition in with it. Struggle always takes preposition with. I used to say that struggle with is a phrasal verb and it always takes preposition with along with itself. So struggle with is the only correct form of this phrasal verb. Now moving towards the forward, they struggle with academics, friendships, and later in their professional lives as well as family lives.
सो यहाँ से आपको इस जुमले की मीनिंग क्लियरली पता चल रही होगी कि स्टूडेंट आर फेसिंग डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस in their academics, friendships, professional as well as family lives. So, and other important thing is as well as is used in the second sentence. What is as well as according to with respect to parts of speech? सर फ्रेजल वर्ब क्लियर नहीं हुआ है सर। फ्रेजल वर्ब अगर मैं आपको उर्दू में समझाऊं तो बेटा जैसे कि स्ट्रगल एक मेन वर्ब है, उसके साथ अगर मैं कोई एडवर्ब लगा दूं और कोई प्रेपोजिशन लगा दूं और उसकी मीनिंग चेंज हो जाए मेन वर्ब से तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाएगा। इट्स ओके सर, थैंक यू सर। जैसे कि सर मैं फ्रेजल वर्ब बोल देता हूँ कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल होना, किसी चीज का कैंसिल हो जाना। ड्यू टू हेवी रेन्स द मैच वाज कॉल्ड ऑफ। इट मींस due to heavy rains match was cancelled. Simply call off is a phrasal verb that means cancel, to cancel something. इट्स ओके सर। Okay, thank you. So moving towards the forward, I asked what is as well as with respect to parts of a speech. Tahir says conjunction, phrase, mehak, doseja, conjunction. Yes, if you are right, close to the correct answer. That as well as is a conjunction. What is conjunction? Actually, anyone can tell. What is conjunction? Define conjunction. Anyone from you? Yes, Tahir, you are right. It joins two sentences. Conjunction. Yeah. Conjunction is a word which connects two words, two sentences, two clauses. That's called conjunction. So here as well as is a conjunction according to parts of speech. Now moving toward the forward with the rapidly changing social dynamics. So here the sentence starts with preposition with. So can anyone tell what this whole sentence is called? A sentence starts with preposition with, but before it comes main subject. Faiza Bhutto says adverbial phrase. Sorry, sir, don't know. So actually, with the rapidly changing social dynamics, this sentence is a prepositional phrase because sentence is starting with a preposition with and becoming before a main subject. So rapidly here means quickly, fastly. So sorry. Fastly is a correct word. Anyone can tell me fastly is a correct verb? I said fastly. No, sir. Why? Fastly is not the correct word actually in the English. But why? Fast होता है. Yes, fastly जो है fast का एडवर्ब कभी भी फास्टली नहीं होता. फास्ट का एडवर्ब भी फास्ट ही होता है. सो रैपिडली का मीनिंग होता है क्विकली, फास्टली, moving towards the forward, coupled with unlimited access to information and technology. अब coupled with आया है. What is this with respect to parts of speech? Coupled with की आप ऊपर एक पढ़ के आए हैं. What is coupled with?
coupled with parts of speech में क्या है? phrasal verb, sir, phrasal No, verb. no, no. Yeah, it is a phrasal verb because the main verb is followed by preposition with. So it is a phrasal verb. Can anyone uh, define the meaning of coupled with respect to this passage, not with respect to the dictionary, meaning that is defined in the dictionary? सर along with बोल सकते हैं? Yes, actually it means along with, together with, along with, together with, that are the meaning of coupled with. Coupled with means उसके साथ, along with इस उसके साथ, अगर उर्दू में मीनिंग करें हम तो coupled with की मीनिंग बनती है उसके साथ. Coupled with unlimited access to information and technology. Today's children are in more precarious position. So can anyone tell me which degree of adjective is used in this sentence? आपने पढ़ी होंगी एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. कौन सी? Superlative. सुपरलेटिव नहीं है. मोर प्रीकेरियस इज नॉट सुपरलेटिव. वो अगर मोस्ट Comparative. प्रीकेरियस होता तो फिर सुपरलेटिव हो जाती थी. Comparative. कंपेरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की जो कंपेरेटिव डिग्री होती है वो प्रीकेरियस होती है. और मोर इज अ कंपेरेटिव डिग्री एंड मोस्ट इज अ आपके पास सुपरलेटिव डिग्री. एक रूल आप ग्रामर का याद कर दें, कहीं भी अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी तो उसके आगे हमेशा द यूज होगा. अगर यहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज करता मैं, टुडेज चिल्ड्रेन आर इन मोस्ट प्रीकेरियस पोजीशन, तो ये गलत होता. फिर मुझे कहना पड़ता टुडेज चिल्ड्रेन आर इन दी मोस्ट प्रीकेरियस पोजीशन. जब भी हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो उसके आगे द प्रीपोजिशन जरूर, द आर्टिकल जरूर लगाते हैं. एनीवन नोज द मीनिंग ऑफ प्रीकेरियस? प्रीकेरियस की एक्चुअली जो मीनिंग होती है वो होती है समथिंग दैट इज डेंजरस, रिस्की, अनसर्टेन, severe. That all are the meanings of word precarious. So moving to word the forward, children suffering from psychological conditions are more likely to fall prey to online groomers and traffickers. अच्छा, यहाँ पे suffering from यूज किया गया है. What is suffer from? It is a prepositional phrase or phrasal verb or adverbial phrase. What is suffer from? Sir, change हो गई. Sir, prepositional phrase. Suffer from is not prepositional phrase. Who says suffer from is a prepositional phrase? I never mentioned that. When I said when a main verb takes followed by preposition or adverb, then it becomes phrasal verb. So suffering from is a phrasal verb. That's not prepositional phrase. Prepositional phrase कि अगर होता ना, फिर फ्रॉम इसके आगे आ जाता, फिर जो है prepositional phrase बन जाता. ये याद रख दें कि जब भी prepositional phrase होगी तो वो उसके आगे कोई ना कोई preposition यूज जरूर की गई होगी. जैसे कि with the rapidly changing social dynamics, ये सेंटेंस सारा जो था आपके पास prepositional phrase था. So suffering from, anyone can tell the meaning of suffering from?
थोड़ा जल्दी करें, ये पूरी करनी है हमें, 9:20 पर क्लास खत्म होगी। सफरिंग फ्रॉम